Very good afternoon, students. Now it's our last lecture on successive differentiation. It's our lecture 17 and the last topic of our unit, that is the Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, that we will see one by one. अब सबसे पहले तो देखेंगे what is a Rolle's theorem, what is the statement of Rolle's theorem. Here we have to simply understand the statement of that Rolle's theorem and then we have to see the problems which is based on that Rolle's theorem. So सबसे पहले what is the statement? If f of x is a function, अब that f of x कौन से फॉर्म में रहेगा? If f of x is a function and first condition, if it is continuous in the closed interval a b, if it is differentiable in the open interval a b, and third condition is if f of a is equals to f of b. मतलब अगर f of x इस फंक्शन में x की जगह अगर a पुट करेंगे that means f of a, x की जगह b पुट करेंगे तो f of b, that means that two end points, and if their values are one and the same, that is the third condition, then there exists at least one point c belongs to that open interval ab such that f dash of c is equals to 0. That is the statement of Rolle's theorem. What is the three conditions? If f of x is a function, then that function should be continuous in the closed interval ab. Second condition should be it is differentiable in the open interval ab. Third condition for that f of x is such that if that f of x is differentiable and continuous in that interval ab, then f of a is equals to f of b, and if it satisfies all these three conditions by the Rolle's theorem, then there exists a point c which is belongs to that open interval ab such that f dash of c, that means derivative of that f of x, that is f dash of x, and when you put x is equals to c, that is f dash of c should be equals to 0. मतलब we have to find that point c such that f dash of c is equals to 0 in that open interval. So that is the statement of Rolle's theorem कि अगर ऐसे तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं फंक्शन f of x, तो वहाँ पे एक पॉइंट बिलोंग करता है दैट टू दैट ओपन इंटरवल सच दैट द डेरिवेटिव ऑफ दैट c, दैट इज f dash of c is equals to 0, and that we have to check. सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा थ्योरम के लिए दैट थ्री कंडीशंस. If that satisfy, that function satisfy three conditions, so obviously there exists that point c in that open interval such that f dash of c is equals to 0. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है which is based on that Rolle's theorem. Check the validity of functions. f of x is equals to x square minus 5x plus 7. Check the validity of functions. f of x is equals to x square minus 5x plus 7 in the interval of Rolle's theorem, or by using a Rolle's theorem. So we can write here, check the validity of Rolle's theorem for the function we write here for the function, that is the function. Check the validity of Rolle's theorem for the function f of x is equals to x square minus 5x plus 7 in the interval 2 3. सबसे पहले तो जो जो कंडीशंस है वो चेक करेंगे. अब यहाँ पे हमारा जो f of x है, वी राइट डाउन दैट f of x is equals to x square minus 5x plus 7. अब अगर ध्यान से देखोगे ये फंक्शन, तो इट इज अ अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल which is algebraic polynomial. अब अगर ये algebraic polynomial है, so obviously it is a continuous in the interval, in the closed interval. यहाँ पे closed interval क्या है 2 and 3, and therefore f of x continuous है. मतलब we can find the value of that f of x in the given interval, closed interval 2 to 3. मतलब अगर कौन सा भी आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे, इफ यू टेक एनी पॉइंट इन बिटवीन दैट 2 and 3 और 2 and 3, so you get the value of that function for that particular point. So we can say that that function is a continuous in that closed interval. अगर किसी भी points के लिए for that interval you take the value of that function, you get that particular value. That value is defined at that point, and therefore we say that f of x is continuous इन क्लोज इंटरवल 2 3. सेकंड कंडीशंस क्या चेक करनी है अब हमें, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशंस.
सेकंड हमें चेक करना है कि इज इट डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे ए बी की जगह क्या है 2 3। अब इसके लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, वी फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। यार एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज डेरिवेटिव इज नथिंग बट 2x माइनस 5। दैट मीन्स डेरिवेटिव शुड बी एग्जिस्ट। इसके लिए एग्जिस्ट हो रहा है फॉर एवरी x which is belonging to that open interval 2 to 3. That means it is a differentiable function f of x for the x belongs to open interval 2 to 3. Now next is we have to check f of a, f of b. अब हमें चेक करना पड़ेगा f of 2, f of 3 की वैल्यू 1 and the same है कि नहीं। Therefore f of 2 is equals to, how you can calculate the f of 2? That is your f of x. What you have to do? You have to put for x is equals to 2. So f of 2 is equals to, here is a 2 square minus 5 into 2 plus 7. Now we calculate that value. That is equals to 4 minus 10 plus 7. What we get there? 4 plus 7, 11. 11 minus 10, that is a 1. So f of 2 is equals to 1. Second we check f of 3. F of 3 is equals to, here is a, what is our function then again, x square minus 5x plus 7. So that is a 3 square minus 5 into 3 plus 7. Okay. So we can write f of 3 is equals to, here what we get there, 9 minus 5 into 3, that is a 15. 15 plus 7. So what you get here, 9 plus 7. That is 9 plus 7 is a 16. So that implies 16 minus 15 and that is nothing but a. So finally you get f of 3. That is also equals to 1. F of 2 is equals to 1. F of 3 is equals to 1. So what we say? Therefore f of 2 is equals to f of 3. That means third conditions of Rolle's theorem is also satisfied here. And therefore what we say here, Rolle's theorem is valid for the function, for which function? For the function f of x is equals to, what is that, x square minus 5x plus 7. अब अगर रोल्स थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल है फॉर दैट फंक्शन, सो ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c belongs to that open interval 2 3 such that f dash of c is equals to 0 and we have to find that point c. Therefore there exists c such that c is belongs to, what is our open interval, यहाँ ab की जगह क्या रहेगा 2 3 रहेगा, such that f dash of c is equals to 0 and f dash of c is equals to 0. So we calculate that f dash of c, सबसे पहले f dash of c मतलब यहाँ पे रहेंगे 2 into c minus 5. f dash of x की जो वैल्यू है वहाँ पे x की जगह c जाएगा, so that implies 2 into c minus 5. लगे तो आप इसको नंबर दे सकते हो, यू गिव इट इक्वेशन नंबर. सबसे पहले इस फंक्शन को हम 1 दे देंगे और इसको हम 2 देंगे. सो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, यूजिंग 2. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू क्या है, दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0. सो दैट इम्प्लाइज 2c इज इक्वल्स टू 5. दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 5/2. That means we calculate that c is equals to 5/2. Now if we calculate the value of c, 5/2, what is 5/2? 2.5. You can calculate that as a 5/2. 2 5s are 10. So that 5/2 is nothing but a 2.5. That 2.5. If you observe that 2.5, so obviously 2.5 is lies in between 2 and 3. So what we say that is belongs to that open interval 2 and 3. What is difference between that open interval and that closed interval? अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ. क्लोज इंटरवल ए बी इंक्लूड्स, अगर क्लोज इंटरवल रहा तो इट इंक्लूड्स ए बी एंड पॉइंट्स in between a b.
including the points A, B and the points in between A, B. And if there is a open interval A, B containing points excluding A and B, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे पॉइंट्स A, B कंटेन नहीं रहते इस ओपन इंटरवल में. सिंपली यू हैव टू टेक अ पॉइंट्स इन बिटवीन A and B containing the points excluding A and B, containing the points in between A and B excluding मतलब अदर देन A and B. यहाँ पे क्या रहता है, इंक्लूड रहते हैं A and B, और यहाँ पे क्या रहता है, एक्सक्लूड. मतलब यहाँ पे A और B नहीं लेते हैं हम. इन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ दैट A and B वी कंसिडर दैट पॉइंट्स. और यहाँ पे A और B के साथ जो पॉइंट्स रहते हैं इन बिटवीन दैट A and B, दैट ऑल्सो वी कंसिडर. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट क्लोज इंटरवल एंड दैट ओपन इंटरवल. सो रिमेंबर दैट. So that is our one problem on the Rowe's theorem, and now we will see one more problem on that. Then we will see these two problems on Rowe's theorem again. Here is determine f of x is equals to x square for the interval 2 to 3, or we don't write it, that means meaning is that the same, that for the interval 2 to 3, and we have to show that it satisfies the Rowe's theorem or not for that given interval. So first we write down the problem here. F of x is equals to, what we have given, x square. Interval is 2 to 3, that is a closed interval. अब जो Rowe's theorem की 3 conditions है, we have to check one by one. सबसे पहले f of x equals to x square है, ये कौन सा फंक्शन है, it is a algebraic function, so obviously that is a continuous for that interval क्लोज इंटरवल 2 to 3. यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू मिलेंगी, वो आप 2 लो, 3 लो, 2.5 लो, एनीथिंग अदर. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मतलब हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो सकती है. सो वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 2 to 3. अब सेकंड कंडीशन रही कि इज इट अ डिफरेंशिएबल. Now if you take the derivative, that is f dash of x is equals to 2x, so that is also differentiable. अगर उसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, so it is a differentiable in that open interval 2 to 3. Now third condition we have to check f of 2 and f of 3 are equal or not. सबसे पहले तो f of 2 देखेंगे. f of 2 is equals to, यहाँ पे x square है तो 2 square, so f of 2 is equals to 2 square is nothing but a 4. When you consider second f of 3 is equals to, there is a x square, so that is a 3 square. 3 square is nothing but a 9. And if you check that both values 4 and 9 that are different, that implies f of 2 should not be equals to f of 3. अगर f of 2 f of 3 के बराबर नहीं है, so we say that all the 3 conditions of that Rowe's theorem are not satisfied. Therefore we write here all that therefore the 3 conditions, 2 conditions satisfy हो रही है, but third is not satisfied. Therefore all 3, हमें तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए होती है. अगर रोज थ्योरम वहाँ पे चेक करना पड़ता है कि इज इट वैलिड और नॉट, बट थर्ड कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. सो वी राइट हियर ऑल 3 conditions are not satisfied by f of x, and therefore what we say that here the Rowe's theorem is not applicable, and therefore Rowe's theorem is not valid here. So all 3 conditions are not satisfied by the function f of x. And therefore Rowe's theorem is not or we can say that are not satisfied by the f of x. All the 3 conditions of what? Of
Rolle's theorem. We can write here of Rolle's theorem are not satisfied by the function f of x. इतना भी लिखा तो भी चले जाएंगे यहाँ पे. That is your final answer. That is all the three conditions of Rolle's theorem is not satisfied by what? By f of x. f of x से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है रोल्स थ्योरम की. सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दी रोल्स थ्योरम. तो यहाँ पे f of x रोल्स थ्योरम से सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है. देन वी कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं हम. सेकंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? Here f of x is equals to sin x. इंटरवल दिया है आपको, क्लोज इंटरवल 0 to पाई. सबसे पहली कंडीशन रहती है कंटिन्यूअस की. f of x is equals to sin x है. f of x is equals to sin x. It is a trigonometric function. So इस इंटरवल के लिए आप अगर sin x को कंसिडर करेंगे तो sin 0 भी आपने लिया तो 0 आ जाएगा, पाई लिया तो भी 0 आ जाएगा, इन बिटवीन पाई बाय 2 लिया तो भी उसकी वैल्यू पॉसिबल है. मतलब हर एक पॉइंट के लिए sin x की वैल्यू निकल रही है फॉर दैट क्लोज इंटरवल 0 to 5. ऐसा कोई सा भी यहाँ पे पॉइंट नहीं है. देयर इज नो सच अ पॉइंट सच दैट द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड ऑफ दैट sin x. सो व्हाट वी से f of x is equals to sin x is continuous in closed interval 0 to पाई. हर एक पॉइंट पे अगर sin x दैट फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है, पॉसिबल है, देन वी से दैट f of x is equals to sin x is a continuous in the interval 0 to पाई. अब सेकंड है उसका डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव? f dash of x is equals to क्या रहेगा डेरिवेटिव sin x का? दैट इज अ cos of x. f dash of x is equals to cos of x है. अब दैट f dash of x is equals to cos x for every x belongs to that open interval 0 to पाई. अब ये हर एक पॉइंट के लिए होगा. दैट पॉइंट इज लाइज इन बिटवीन 0 to पाई अदर देन 0 to पाई. 0 to पाई के बीच में कौन सा पॉइंट आता है? इन बिटवीन 0 to पाई देयर इज अ पाई बाय 2. इफ यू कंसीडर दैट पाई बाय 2, cos of पाई बाय 2 is a 0, and so obviously that is also belongs to that interval f dash of x is equals to cos 0. That is also belongs to that 0 to pi. That is a differentiable. That means we say that it is a differentiable. उसके बाद now we take the next point. If you take in between any point that is 0 to pi के बीच में जो कुछ भी पॉइंट रहेगा आपका pi by 4 रहेगा, pi by 3 रहेगा. So if you put that value of x here, so you get a particular value of that cos. That is not a infinite, that is a defined value, and therefore we say that the derivative of that f dash of x is equals to cos x. That derivative is differentiable in that open interval 0 to pi. उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है f of 0 निकालना पड़ेगा हमें और f of pi भी निकालना पड़ेगा. f of 0 क्या होगा आपका? f of x is a sin x, so f of 0 is a sin 0. Sin 0 is nothing but a 0. When you take a f of pi is nothing but a sin pi. Sin pi is also 0. मतलब f of 0 f of pi की वैल्यू सेम आ रही है. सो दैट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है? दैट इम्प्लाइज f of 0 is equals to f of pi. सो देयरफॉर तीनों भी कंडीशंस क्या हो रही है? देयरफॉर थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम यहाँ पे क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है. सेटिस्फाई. अब तीनों भी कंडीशंस अगर रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, सो ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C such that f dash of C is equals to 0. So I will write on that side. So if you consider here, therefore we say here, therefore there exists C belongs to that open interval 0 to pi such that, what is that? Such that f dash of C is equals to 0. So that implies f dash of C means f dash of x. So it is a f dash of C is equals to, हम क्या लिखेंगे? f dash of C is equals to 0 ऐसे फॉर्म में रहेगा. f dash of x हमारे पास क्या है? f dash of x as f dash of x is equals to क्या है हमारे पास? That is a cos of x. So f dash of C क्या हो जाएगा?
एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा कॉस ऑफ सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब कॉस सी अगर 0 है तो सी की वैल्यू क्या होंगी, इफ कॉस सी इज इक्वल टू 0 फॉर द इंटरवल in the interval 0 to pi, for the interval for open interval 0 to pi. So what is the value of c, that c should be equals to, that implies c is equals to एक ही पॉइंट हो सकता है for that interval, that is nothing but a pi by 2, that pi by 2 is lies in between 0 to pi, और ये पॉइंट हो सकता है c is equals to pi by 2, obviously that is belongs to 0 to pi. cos c is equals to 0, c पॉइंट कौन से c के पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होंगे, दैट इज फॉर ओनली c is equals to pi by 2। अगर pi by 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पता है cos pi by 2 is a 0 and that pi by 2 is obviously lies in between the open interval 0 to pi, so that c is nothing but a pi by 2. So we have find that point c which is belongs to that open interval 0 to pi. In this way we show that sin x for the closed interval 0 to pi satisfy the three conditions of Rolle's theorem. First condition, that sin x is a continuous function in the closed interval 0 to pi. Continuous means at every point of that closed intervals the value of sin x is defined. That means we can find the value. And next is f dash of x is equals to cos x. That means if you take the derivative of that f of x, f dash of x is equals to cos x. So if you consider the value of x for that open interval for every point in between that 0 to pi, if you take in between that 0 to pi, that is suppose pi by 3, pi by 2, pi by 4. So for every point we can find the value of cos x. Then next we check f of 0. F of 0 is a sin 0 0. F of pi is nothing but a sin pi, that is also 0. So that condition is also satisfied, that is f of 0 is equals to f of 4. So in this way these three conditions satisfied by the Rolle's theorem. So obviously we can say that there exists a point c which is belongs to that open interval 0 to pi such that f dash of c is equals to 0. f dash of x is equals to cos x है तो f dash of c is equals to cos c is equals to 0, so that implies c is equals to pi by 2. अगर cos c is equals to 0 है तो c क्या हो सकता है, it is a pi by 2 and that pi by 2 is obviously it is belongs to that open interval 0 to pi. So in this way we get that point c. Hope you understand that. अब इसके बाद हम देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ प्रॉब्लम्स आपको रोल्स थ्योरम के मैं होमवर्क के लिए दूंगी. Now we will see next theorem, that is the Lagrange's mean value theorem. What is the statement of that? If f of x is a continuous in the interval closed interval ab, f of x is differentiable in open interval ab, then there exists a point c which is belongs to that open interval ab such that f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. मतलब ऐसा एक पॉइंट वहां पे प्रेजेंट होता है in that open interval ab such that it satisfy that condition, that is f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. So one by one we have to check that condition these are satisfied or not. मतलब सबसे ये दो कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये चेक करनी पड़ेंगी. इफ दैट इज सेटिस्फाइड सो ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल ab. सबसे पहले हम फंक्शन कंसीडर करेंगे f of x. f of x इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव गिवन x क्यूब. इंटरवल इज -2 to 2. नाउ f of x इक्वल्स टू x क्यूब है. x की अगर कोई भी वैल्यू लेंगे आप 1 2 3 4 5 एनी, सो ऑब्वियसली वो क्या रहने वाली है उस इन बिटवीन दैट -2 to 2. इफ यू टेक एनी वैल्यू, -2 भी लेंगे तो वैल्यू निकलेंगी, +2 लेंगे तो भी वैल्यू निकलेंगी x क्यूब की. इफ यू टेक इन बिटवीन -2 to 2 सपोज 1 then -1 any value 0, so that for all that values you get the value of f of x. So what we say, f of x equals to x cube is continuous. कहाँ पे कंटिन्यूस है? इन दैट क्लोज इंटरवल -2 to 2. नाउ आप देखते हैं उसका डेरिवेटिव f dash of x. f dash of x क्या आएगा डेरिवेटिव, दैट इज a 3x square. 3x square, that derivative is a 3x square. So that for every x belongs to that open interval -2 to 2. अब अगर इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं
कोई भी पॉइंट आप यहाँ से लेंगे इन बिटवीन दैट -2 to 2, सपोज दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज -1, any point. So for every point you get that f dash of x, and therefore that derivative should be exist for that open interval -2 to 2. So if that both conditions are satisfied, so what we say that यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि therefore f dash of x is that means it is a differentiable. So both the conditions are satisfied, therefore what we say that therefore Lagrange's mean value theorem is verified. अब अगर ये वेरीफाइड हो रहा है तो क्या रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर. सो व्हाट वी से दैट देयर एग्जिस्ट C belongs to that open interval -2 to 2, and now we have to find that C. What is the relation? It is a relation such that relation क्या रहता है, f dash of C is equals to, we have to put that relation f of b minus f of a upon b minus a. तो यहाँ पे b की जगह 2 है और a की जगह -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f of 2 minus f of -2 upon 2 minus of -2. Okay, so that can be written as, here is a, we have to put one by one all that values. F of 2, you have to calculate f of 2. What is your f of 2? F of 2, f of x is equals to x cube. So f of 2 is equals to 2 cube. That is nothing but 8. F of -2, that is equals to -2 cube. That is nothing but a -8. तो दोनों भी वैल्यू निकाली है हमने, f of 2 भी निकाली है और f of -2 भी निकाली है. तो अब क्या करेंगे, therefore f dash of c is equals to, यहाँ पे 8 minus of -8, यहाँ पे 2 minus of -2, 2 plus 2 it become a 4, 8 plus 8 that is a 16 by 4. So what is the value of that? So it gives 4. 4 4s are 16. So f dash of c is equals to, what we get, a 4. But what is the value of f dash of c? Now that is nothing, we have that relation, but here that is the value of f of 2 minus f of -2 upon 2 minus of -2. ओके, ये तो है हमारी RHS. अब LHS की वैल्यू क्या है, and f dash of c is equals to, how we calculate f dash of c? f dash of c is from f dash of x. तो f dash of c क्या मिलेगा हमें, 3c square. लगे तो यहाँ पे इसको नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1. वी गेट दैट वैल्यू यूजिंग 1. हमने 1 में क्या किया है, सिंपली x की जगह हमने c पुट किया है. सो वी गेट दैट 3c square. सो फाइनली व्हाट वी गेट दैट इम्प्लाइज f dash of c इज इक्वल्स टू दैट. यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर, हमारे पास ये रिलेशन है, सपोज दैट इज आवर टूर. सो यूजिंग in 2 above values, using above values of which values, of that f of 2 minus f of -2 upon 2 minus of -2, using above values. कहाँ पे यूज करने हैं हमें, इन इक्वेशन 2. वी हैव टू यूज दैट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2. हमारे पास दोनों भी वैल्यूज है, इसकी भी वैल्यू हमने निकाली है RHS की और LHS की भी निकाली है. दैट इज द वैल्यू ऑफ RHS, दैट इज द वैल्यू ऑफ LHS. सो ये LHS की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली. अब दोनों भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग अबव वैल्यूज. कहाँ पे यूज करना है हमें, इन इक्वेशन 2. सो देखिए इक्वेशन 2 में क्या चेंजेस होंगे फिर, दैट इज 3c square is equals to 4. So that implies c is equals to 4 by, sorry, c square is equals to 4 by 3, and if you take a square root, so c is equals to 2 by root 3. So in this way you get c is equals to 2 by root 3. So in this way we calculate the value of that point c, that is c is equals to 2 by root 3, so which is obviously lies in between -2 to 2. That is lies in between -2 to 2. If you calculate that, so obviously that value is lies in between -2 to 2. root 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो,
that is a 2 upon it's something 1.414 something आएंगी, 1.41 something, and when you take that 2 point of that value, so that is finally which is always lies in between -2 to 2. So in this way we get that point. और इसके बाद आते हैं हम ये sorry -2 to. Now we consider that problem f of x is equals to x raised to the power 2 by 3. That is the next problem. Now we consider that, which is that f of x is equals to x raised to the power 2 by 3. हमारा इंटरवल है -8 to 8. सबसे पहले अब अगर ध्यान से देखोगे फंक्शन तो अलजेब्रिक है, सो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट के लिए -8 to 8 में इसकी वैल्यू मिलने वाली है. सो व्हाट वी से दैट f of x is equals to x raised to the power 2 by 3 क्या है? यस, इट इज अ कंटिन्यूअस. कहाँ पे कंटिन्यूअस है? इन द क्लोज इंटरवल -8 to 8. अब उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. f डैश ऑफ x क्या होगा हमारे लिए? दैट इज इक्वल्स टू 2 by 3 x raised to the power 2 by 3 minus 1. x raised to the power 2 by 3 minus 1. So that is 2 by 3 x raised to the power 2 by 3 minus 1. तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 2 by 3 minus 1. That is 2 minus 3 into minus 1. 3 by 3. That is minus 1 by 3. So we get x raised to the power minus 1 by 3. So that gives f dash of x is equals to 2 by 3. ये x डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पे पावर होगा x raised to the power 1 by 3. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दैट इज 2 by 3. What is value of that 2 by 3? 2 by 3 क्या होगा आपका? That means you have to divide that 2 by 3. तो यहाँ पे पॉइंट होगा. So that is 20. 3 6 are 18. So it become 18. So that is nothing but a 2. So यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है 2 by 3 की? that is 0.6. इसकी वैल्यू 2 by 3 की वैल्यू 0.6 समथिंग, उसके बाद भी आगे 0.66 वगैरह समथिंग. एंड हियर इज 1 upon x raised to the power 1 by 3. नाउ वैल्यू पुट एनी वैल्यू ऑफ दैट x. यहाँ पे f dash of x कैसे रहता है? दैट इज बिलोंग्स टू दैट इंटरवल -8 to 8. अब -8 to 8 के लिए हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सपोज माइनस हमने 7 ली, -9 ली, दैट बिकम अ निगेटिव. और वो निगेटिव वैल्यू लेंगे, जितनी भी बड़ी लेंगे छोटी लेंगे आप, तो वो जो वैल्यू आने वाली इट इज अ वेरी वेरी लेस. दैट इज 0.66 इंटू समथिंग. मतलब वो -8 से निगेटिव लेंगे तो वो निगेटिव आएंगे. सो दैट इज ऑब्वियसली लेस देन -8. अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सपोज यहाँ पे हमने 2 लिया, 3 लिया, दैट इज 2 raised to the 1 by 3. सो अगेन इट इज अ वेरी वेरी लेस वैल्यू. सो what about that differentiation of that term is not belongs to possible, not belongs to that -8 to 8. So what we say that therefore f dash of x is equals to 2 by 3 x raised to the power 1 by 3. That is not belongs to that is not possible for every x which is belongs to that -8 to 8. For the open interval -8 to 8 not possible. And therefore what we say that here therefore f of x not satisfy which theorem? Not satisfy the Lagrange's mean value theorem. Not satisfy the Lagrange's mean value theorem, and therefore we can't get that point C here. तो ये हो गया एक नॉट सेटिस्फाइड का. इसके पहले का सेटिस्फाइड के लिए हमने देखा था. अब ये 2 प्रॉब्लम्स है आपके लिए, दैट इज फॉर योर होमवर्क. सो यू हैव टू डू दैट बोथ प्रॉब्लम्स.